Kareri village out of the world. So right now after Trion Trek we are at Kareri village and today we are going to stay here only at this beautiful rest house. तो यहाँ पे स्टे करने के बाद कल हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर देंगे मिनक्यानी पास के लिए और कल हम रुकेंगे कारेरी लेक में. सो आई विल शो यू गाइस. So we are ready for Kareri Lake Trek today and we'll be riding for 1 kilometer on this bullet. Woo! Woohoo! चलो तो फिर अब हम चल रहे हैं कारेरी लेक. चलो यार, come on, you can do it. Woohoo! We have reached the initial point of the trek, this bridge, but usually people started from Kareri village. तो हमने बुलेट ले ली अपने दोस्त की और हम लोग 3 किलोमीटर तक बुलेट पे आ गए और बुलेट हमने यहाँ पे पार्क कर दिया और अब हम लोग ट्रैक यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो अब हमारा जो ट्रैक है वो सिर्फ 10 किलोमीटर का बचा है. रोड काफ़ी टूटी हुई है तो हर कोई ड्राइव नहीं कर सकता वहाँ पे और गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है. ठीक है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि ट्रैक जो है पैदल करते हैं 3 किलोमीटर का गांव से लेकर यहाँ तक. तो अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, ट्रैक स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. We reached Rioti within like 2.5 hours and it was 5 kilometers from the bridge and we took a break of around half an hour and then now we are moving towards Kareri Lake from this place. Good morning. So we reached Kareri Lake at around 7 p.m. So it was quite dark. Now it is 9 a.m. and we are heading back towards Kareri village because we cannot do Minkyani Pass. The weather is not good for the trek. तो अभी हम मिनक्यानी पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऊपर स्नोफॉल हो रहा है और ओले गिर रहे हैं और मौसम काफ़ी ख़राब होने के चांसेस है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब नीचे जा रहे हैं कारेरी विलेज के लिए और
वेदर बहुत ठंडा है अभी. It's very good. It is amazing. It is a beautiful feeling as usual. Mountains, you know, are the best. Sure.